लैपटॉप डाउन कर देलनि सेपटे गुड इवनिंग एवरीवन जय जगन्नाथ जय श्री राम भूमिका गुड इवनिंग सौम्याश्री प्रियंका सौदामिन श्वेतालिन राधे 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 एवरीवन विवेक गायत्री गुड इवनिंग हरिहर राधे राधे सर इतिश्री शुभदर्शिनी योर सीक्रेट डार्लो गुड इवनिंग सुप्रिया गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग वॉइस ऑफ कृष्णा गुड इवनिंग सर आउ को मन सब रहले जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करो एंड हमें 50+ हो माने इमीडिएटली लाइव स्टार्ट करिया and the most unique and the interesting topic is human reproduction right तो सही विषय हमर आज डिस्कशन तारे एमसीक्यू नै की एंड आल्सो मो किछरा क्वेश्चन पचारि की चैप्टर को कवर अप करिया देन जति चैप्टर सरचे ताको नै की पुणी आउथरा हमर करा जिवो दैट इज रैपिड फायर सो सब भाई रेडी हो एंड संध्या जय जगन्नाथ सर जय जगन्नाथ टू एवरीवन ज्योतिर्मयी हेलो सर भलो अछि आपण ब्रिजेश यस भलो तमे भलो अछो हाँ सर बहुत भलो टॉपिक जय श्री राम तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो एंड हमें स्टार्ट करिया ठीक अछि पिला बोते सोई छथि 6टा बजलानी एते लेट रे पिला सोउ छथि केमती असुमान गुड इवनिंग सोतालिनी सौदामिन अर्चिता प्रीति जोष्टा भूमिका सुब्रत 43 वाचिंग देन जल्दी जल्दी शेयर करो 50+ हबो तो संगे संगे स्टार्ट करिया हेलो सर प्लीज क्लास टा जल्दी सारिबे ठीक अछि क्वेश्चन सरले तो क्लास सरीबो प्रियंका हाय सर अंकिता गुड इवनिंग हाय सर राकेश सिकी आउ सब ठीक ठाक सब भलो चलची एंड तुम तो सब लाइव क्लास जॉइन करथिबो एंड हमर थिला 12टा बेले सूर्य सरंकर देन अपकमिंग क्लास केमिस्ट्री या फिजिक्स ए सब रहइबो मैथमेटिक्स भी रहइबो तो जो पिला माने तमरो इंटरेस्टेड थिबे तम सांग माने की माने ओयूटी पाई से माने कोटे बेस्ट कोचिंग पाई परिए बोली तो जदी से भला किछि पिला तम फ्रेंड सर्कल रे अछन या देन तम माने कहि परिबो कि विद्यासागर क्लासेस जोटी की एक्सक्लूसिवली ओयूटी बैच पे प्रिपरेशन बा कोचिंग दिया होची एडवांस हैप्पी रामनवमी सेम टू यू पायल गुड इवनिंग चलो स्टार्ट करिया 53 वाचिंग तो स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन यूटेरस इज कॉमनली नोन एज बर्थ कैनल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओम्फ ना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सर केमिस्ट्री क्लास रखंतु ठीक अछि केमिस्ट्री क्लास रखिया ये गोटे कथा तृप्ति पूरा बोबाल लगे आपण क्लास तमाने पूरा बोबाल चलो फर्स्ट क्वेश्चन कोन हो यूटेरस इज कॉमनली नोन एज ओम राइट यूटेरस इज कॉमनली नोन एज ओम एंड अदरवाइज व्हाट इज द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ यूटेरस तुम देखि दियो बहुत सारा फीमेल मानो केस रे यूटेरस को कंप्लीटली दैट इज रिमूव करा जाय एंड द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी एंड अदरवाइज तुम भी कहि परिबो हिस्टर ठीक अछि हिस्टर और ओम और यूटेरस एंड यूटेरस रिमूव होबार बहुत सारा कॉज थाए एंड आल्सो जदी कोन से फीमेल रो यूटेरस को कंप्लीटली रिमूव करा होची देन से आ प्रेगनेंसी हेई परिबो नाही एंड आल्सो मेंस्ट्रुअल सेल साइकिल भी एब्सेंट हे जो बा दैट इज द मंथली साइकिल से भी एब्सेंट हो एंड आल्सो द फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट ओके ठीक अछि तो हमर ऑनलाइन रिपोर्ट केबे स्टार्ट करियो ऑनलाइन रिपोर्टेशन नेक्स्ट क्लास रे स्टार्ट करिया ठीक अछि एबे कंफर्म करो कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियरली विजिबल होची कि नहीं अनन्या तृप्ति ब्रिजेश
भूमिका yes okay तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा को जे व्हिच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दिस इज कॉल्ड एज ओवरी राइट ठीक अछि देन चलो बर्थ कैनाल गोटे ऑप्शन दउची बर्थ कैनाल कहा को नहीं आई थिंक बर्थ कैनाल नेक्स्ट क्वेश्चन तम भाई द यूटेरस ओपन्स इनटू द वाजाइना थ्रू यूटेरस टा वाजाइन को ओपन होची थ्रू दी आम्पुला सर्विक्स इस्थिमस लाबिया माइनोरा कौन आंसर सपोज दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जदि हम करिया and suppose this is the female reproductive system like here what is diagram करिया तो हमें जानिचे that is pair of ovary is there and this is called as the cervix area and cervical canal and this is suppose this is the vagina तो क्वेश्चन पचला the uterus opens into the vagina this is the uterus तो uterus टा vagina को open ହେଇची through the answer is cervix right this is the vagina and most important point birth canal कहा को नहीं करी birth canal and the answer is cervical canal plus vagina और vagina plus cervical canal equal to birth canal right cervix sir correct answer C भूमिका प्रतीक्षा right तो answer is cervix तापर को in which junction of the fallopian tube the fertilization occurs for example suppose this is the sperm and this is the infundibulum this is the ampulla and this is the isthmus in which junction infundibulum रो ampulla junction भितरे या ampulla to isthmus junction भितरे को junction भितरे mostly fertilization occurs in which junction of the fallopian tube or in which area of the fallopian tube the fertilization occurs infundibulum to ampulla to isthmus ampulla region ampulla isthmic region saraswati trupti ampulla isthmic region right the perfect answer is ampulla isthmic region that is the fertilization of sperms and ovum occurs right then next question uterus ro how many layers in uterus how many layers in uterus option 1 2 3 uterus रो केतरा लेयर बा uterine wall केतेटा बा हम कहि परा how many walls or how many uterine walls in uterus कोन आंसर 57 वाचिंग हाउ सब पिला कोडा गले अमेजिंग कृष्ण जय श्री राम कृष्ण the answer is 3 layer and the outer layer is called as what is the outer layer perimetrium then myometrium then endometrium right perimetrium myometrium endometrium then more question होची that is implantation कोठी हुए को wall रे implantation हुए perimetrium myometrium endometrium among the three wall or among the three layers which provide the site for the implantation perimetrium myometrium endometrium which is the most important or which is provide the site for the implantation right perimetrium myometrium endometrium कोठी that is के site provide करे for the implantation perimetrium myometrium endometrium subosmita endometrium right endometrium that is site provide करे for the implantation right that is uterus रो endometrium रे हमरो implantation हुए चलो next birth canal is formed by ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें करले birth canal कहा को नहीं करी birth canal is formed by गायत्री सिक्की एंडोरे हेबो कृष्ण भूमिका कृष्ण हरिहर सबु देवा देवी हमर एठी ना कृष्ण जय श्री कृष्ण हरिहर शिव एठी अछंती देन ताले कोन आंसर birth canal is formed by the cervical canal plus vagina right cervical canal plus vagina what is the pH of the vagina acidic pH or basic pH acidic or basic what is the pH of vagina acidic or basic सुकन्या कृष्ण तृप्तिमयी
That is the pH of vagina. Acidic, right? Nomospitha, acidic. And the cause of acid is there is a bacteria in the vagina. So there are so many bacteria are present in the female vagina, and one of the bacteria called as Lactobacillus acidophilus. A Lactobacillus acidophilus bacteria that is the pH acidic maintain करे inside the vagina. ठीक अछि चलो then next एई गोटे क्वेश्चन तुम पचारे जीवो फॉर एग्जांपल टेस्टिस inside the seminiferous tubule कौन cells अछि suppose this is the seminiferous tubule inside the seminiferous tubules what are the cells को cells अछंती male germ cell Sertoli cell then Leydig cell seminiferous tubule भितरे Leydig cell and fourth one is Kupffer cell. Which cells are present inside the seminiferous tubule? Seminiferous tubule भितरे को cells अछंती मेल जर्म सेल स्वयं सुमन बिरियानी सर केबे बिरियानी देबे जेबे कहबो सेबे दियाबो लैक्टोबैसिलस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज ए बैक्टीरिया द पीएच ऑफ द vagina is acidic right राजा सर बिरियानी लवर OUT क्वालिफाई करले देबे ठीक अछि अरे तो एसिडिक पीएच मेंटेन होबा दरकार बिकॉज़ जेतले हमर गोटे टाइम इजैकुलेशन रे 250 टू 300 बा 200 रु 300 मिलियन जेतले स्पर्म जानती तो मैक्सिमम स्पर्म दैट इज भाजाइना रो पीएच रे भी नष्ट हो जाइतांती ठीक अछि मेल जर्म सेल एंड आल्सो दैट इज भाजाइना रे किछि जदी एसिडिक पीएच न रहबो किछि फंगल इन्फेक्शन हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ए सब भी हेई परियो तो दिस इज द कॉज ऑफ व्हाई द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस मेंटेन द पीएच एसिडिक इन द भाजाइना the male germ cell and the Sertoli cells these two cells present inside the seminiferous tubule and the Leydig cell which is present or we can say that the outside of the seminiferous tubule. Then next the wall of the uterus is made up of dash layer of tissue 78 watching gone about the wall of the uterus is made up of dash layer of tissue wall of uterus ebe ame question sanction kale male germ cell and Sertoli cell right मेल जर्म सेल एंड Sertoli cell ताकू नै कि गोटे बढ़िया क्वेश्चन पचारिया दैट इज मेल जर्म सेल एंड Sertoli cell को नै ठीक अछि द वॉल ऑफ द यूटरस इज मेड अप ऑफ राइट 3 लेयर तापर मते को मेल जर्म सेल को हमें कोन कहि परिया मेल जर्म सेल इज स्पर्मेटोजोआ कहि परिया और स्पर्मेटोगोनिया कोन हमें कहि परिया और वी कैन से दैट मेल जर्म सेल इज अदरवाइज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया male germ cell is otherwise called as spermatozoa or spermatogonia रश्मि प्रभा male germ cell inside the seminiferous tubule जदि हमें testis रो anatomically देखिया this is the testis and the weight of the testis is 14 gram and testis भितरे there is the compartments and the each compartment called as testicular lobules and a testicular lobule बा जो compartments रहिला गोटे compartment को zoom करिया ता भितरे 1 रो 3 seminiferous tubule पाया and the seminiferous tubule भितरे two types of cell था male germ cell and Sertoli cell male germ cell is otherwise called as spermatogonia not spermatozoa spermatogonia male germ cell is otherwise called as spermatogonia right and spermatozoa is called as the mature sperm ताले हम जदि क्वेश्चन हम पचारिबो spermatogonia which is called as the male germ cell by sperm producing cell or sperm stem cell spermatogonia ru mature sperm बा स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को हमें कहि परिया स्पर्मेटोजोआ ठीक अछि तो स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजोआ रा प्रोसीजर को हमें कोन कहि परिया स्पर्मेटोजेनेसिस ना स्पर्मियोजेनेसिस completely procedure means from spermatogonia to spermatozoa or spermatogonia to spermatozoa immature spermatogonia to mature spermatozoa और हमें कहि परिया sperm means spermatozoa is otherwise called as sperm
but spermatogonia is otherwise called as the male germ cell जोटा कि थाए inside the testis बा जोटा है sperm producing cells or we can say that sperm stem cells or we can say that is spermatogonia ठीक अछि ताले कोन हो spermatogenesis right तो spermatogenesis the procedure or the process in which the spermatogonia or the male germ cell which is present inside the testis spermatogonia produce spermatozoa सेही जो प्रोसीजर को बा प्रोसेस को हमें कहूचे कोन दैट इज spermatogenesis राइट एंड जदी तुमे इंटरेस्टिंगली सुनिबो दैट इज जदी हमें देखिया गोटे नॉर्मल ऊपर गोटे मेल रो गोटे टेस्टिस रो वेट ईच टेस्टिस बा गोटे टेस्टिस रो वेट अप्रोक्सीमेटली 14 ग्राम तो 14 ग्राम बोले एंड ता भितरु गोटे ग्राम टिश्यू गोटे सेकेंड रे 1000 भलिया स्पर्म प्रोड्यूस करि परिबो 1000 माने गोटे टेस्टिस रो वेट 14 ग्राम एंड ता भितरु गोटे ग्राम टिश्यू गोटे सेकेंड रे दैट इज 1000 भलिया स्पर्म प्रोड्यूस करि परिबो बा स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस करि परिबो एंड तुम भाबो गोटे ग्राम टिश्यू रो गोटे घंटा रे केते स्पर्म प्रोड्यूस होतबो एंड गोटे ग्राम टिश्यू रो गोटे दिन रे केते प्रोड्यूस होतिबो सेमती 14 ग्राम टिश्यू रो गोटे सेकेंड रे केते प्रोड्यूस होतो 14 ग्राम टिश्यू रो गोटे घंटा रे केते एंड 14 ग्राम टिश्यू रो गोटे दिन रे केते तो देयर इज million of sperms are produced in your daily life और हम जदी कहया in case of male that is 200 to 300 million sperm basically formation होची एंड जदी हमें क्वेश्चन एडी पचारिया 1 second failure of descent of testis into the scrotum जेतबेले suppose this is the scrotum and scrotum भितरे these are the testis this is the scrotum and this is the scrotal sac तो my question is जेतबेले टेस्टिस टा फेल्युअर टू डिसेंड इन द स्क्रोटम बा जेतबेले मेल रो टेस्टिस टा स्क्रोटम भितर को बा स्क्रोटम भितर को रिलीज होबार फेल्युअर हुए दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड द फेल्युअर ऑफ टेस्टिस डिसेंड टू द स्क्रोटम कोन आंसर what is the answer failure of cryptorchidism right the answer is cryptorchidism हमें जानी छे नॉर्मल गोटे मेल केस रे टेस्टिस टा अप्रोक्सीमेटली केते 7 रु 8 वीक जेतबेले गोटे फीमेल जेतबेले गोटे मार पेट भितरे बा मार ओम रे और मार यूटेरस रे जेतबेले गोटे मेल बेबी ग्रो करे थाए तो सेतबेले मेल बेबी रो 7 रु 8 वीक बा जेतबेले 7 सप्ताह रु 8 सप्ताह हेतिबो तो सेही टाइम रे दैट इज टेस्टिस टा फॉर्मेशन हेबा स्टार्ट हेजिवो बट डिसेंट केतबेले हबो डिसेंट सेतबेले हबो जेतबेले 7 रु 8 मंथ बा 7 रु 8 मास जेतबेले चलतिबो सेतबेले टेस्टिस टा डिसेंट हबो बट फॉर्मेशन हेतिबो दैट इज 7 टू 8 वीक एंड बेले बेले कंडीशन आसे गोटे गोटे पिला केस रे कोन होबे ना बोथ दीटा को टेस्टिस भी स्क्रोटम मित्र को आसी नथिबो एंड हमें जानि छे दैट इज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो बेले बेले सिचुएशन आसे जनकर गोटे टेस्टिस आसीथिबो एंड गोटे टेस्टिस भी आसी नथिबो तो मे बी यूनिलैटरल हेइथै पारे और मे बी बायलैटरल यूनिलैटरल मींस दैट इज गोटे टेस्टिस आसीथिबो एंड आउट टेस्टिस आसी नथिबो तो ये ठीक अछि तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया तो देन एटी क्वेश्चन पचारे जदी गोटे ग्राम 14 ग्राम जदी गोटे टेस्टिस रो वेट एंड 14 ग्राम वेट रो गोटे ग्राम टिश्यू रो जदी 1000 स्पर्म रिलीज हो स्पर्म प्रोड्यूस हो नॉट रिलीज स्पर्म प्रोड्यूस हो इन 1 सेकंड ताले एते स्पर्म टा दैट इज कोन होची एंड द फागोसाइटोसिस कोठी होची हम जदी गोटे जनरली स्ट्रक्चर करिया 1 मिनिट दिस इज द टेस्टिस राइट एंड टेस्टिस भितरे दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड जदी गोटे स्पर्मेटिक कॉर्ड कोन कॉर्ड जो हमें जेंते तार गोटे धरुचे जेंते इलेक्ट्रिक कॉर्ड जेतबेले गोटे तार को धरिया सपोज हम गोटे इलेक्ट्रिक कॉर्ड को धरिया बा तार को धरिया तो से तार भीतर कोन गोटे कॉर्ड माने ता भीतर बहुत सारे जिंस थिबो तो टेस्टिस कम्युनिकेट करिया पई दैट इज आ भीतर ब्लड वेसल थिबो एंड आल्सो लिम्फेटिक वेसल थिबो एंड आल्सो नर्व थिबो तो एमती हम गोटे जनरल जे गोटे रफ डायग्राम करिया दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो एई वाला स्ट्रक्चर जे गोटे रफली करिया
तो ये स्ट्रक्चर ना तो এই जो स्पर्मेटिक कॉर्ड रहिला स्पर्मेटिक कॉर्ड भितर ब्लड वेसल थिबो लिम्फेटिक वेसल थिबो एंड आल्सो नर्व थिबो बा हमें कहि परिया टेस्टिस कम्युनिकेट विथ द एब्डोमिनल कैविटी बा एब्डोमिनल कैविटी बा पेट भितर जो कैविटी टेस्टिस तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बा बॉडी रो बाहर अछि तो टेस्टिस कम्युनिकेट विथ द एब्डोमिनल कैविटी बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड सो इंटरेक्शन करे तो व्हाट माय क्वेश्चन इज धर स्पर्म टा प्रोड्यूस हेगला बा स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हेगला बट ये जो पाथ गोटे अच्छे टेस्टिस टेस्टिस रु रेटे टेस्टिस देन भास डिफरेंशिया देन एपिडाइमिक्स देन भास डिफरेंशिया क्वेश्चन इज ऑप्शन दोची ये वीडियो पोस्ट होबो 100% ये वीडियो पोस्ट होबो लाइव परे मो क्वेश्चन होची जे तो मेल केस रे स्पर्म टा प्रोडक्शन हे जाउची स्पर्म टा स्टोर कोठ हुए ऑप्शन रेटे टेस्टिस भास डिफरेंशिया एपिडाइमिक्स which of the following option provide the surface for the storing of the sperm rete testis vas efferentia epididymics कोठी that is sperm टा स्टोर हुए कोन आंसर सरस्वती हबर रे लियो ब्लडी स्वीट 82 वाचिंग जल्दी शेयर करो एंड 100 करो मो क्वेश्चन कोन थिला that is sperm टा प्रोड्यूस हे गला पर टेस्टिस भितर कोठी स्टोर होबो रेटे टेस्टिस ना भास डिफरेंशिया ना एपिडिडाइमिक्स और जो को हमें कहे स्पर्म इज स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन एपिडिडाइमिक्स राइट सरस्वती एपिडिडाइमिक्स रेडी एपिडिडाइमिक्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूटेरस एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूटेरस यूटेरस रो सबठारु एक्सटर्नल लेयर कोटा आराम से क्वेश्चन करिवो एक्सटर्नल कौन हम पेरीमेट्रियम देन मायोमेट्रियम देन दिस वन इज एंडोमेट्रियम ताले कौन आंसर पेरीमेट्रियम राइट तापर मते को ड्यूरिंग द पार्चुरेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन एंड यू ऑल नो दैट इज पार्चुरेशन और द डेलीवर ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन जतो बेले बेबी रो डेलीवर हबो एंड सपोज दिस इज द बेबी ठीक है सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेबी एंड हम जानिचे ड्यूरिंग द डिलीवरी दैट इज द हेड शुड बी द फर्स्ट पोजीशन टू बी रिलीज बा जतो बेले भाजाना देकिरी हमर गोटे बेबी रो डेलीवर हबो सबले पई मुंडटा ही भाजाना टुवर्ड्स द भाजाना रहया दरकार बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ बा जन्म टाइम रे द डायमीटर ऑफ द हेड इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द बॉडी सो बेबी रो जदी हेड टा आगो बाहर की पळी आसीबो देन अल्टीमेटली completely baby टा ही पळे आसो और जदी हेड टा जदी डिफिकल्ट होबा आसे फर्स्ट तो ऑब्वियसली दैट इज प्रॉब्लम होबा एंड प्रॉब्लम हेले से केस रे सिजेरियन सेक्शन करा जिवो बा सीएस बा जोटा को हम कहू छी सिजेरियन रे बेबी टा डेलीवर होला तो क्वेश्चन इज तो ड्यूरिंग द पार्चुरेशन बा पार्चुरेशन टाइम रे बा डेलीवर ऑफ द बेबी जेतोले बेबी टा डेलीवर होची से टाइम रे सपोज दिस इज द मदर सपोज रफ डायग्राम सपोज दिस इज द मदर तो मदर रो क्वेश्चन इज को हार्मोन टा एक्ट करिवो कोठी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑप्शन दोची ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन एडीएच अंक भितर को हार्मोन टा पार्चुरेशन बेले मदर रो यूटेरस को कंट्रैक्शन करिया रे हेल्प करिवो ऑक्सीटोसिन ना भासोप्रेसिन कोन हबो व्हिच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन बा बेबी रो डिलीवर टाइम रे को हार्मोन टा राइट ऑक्सीटोसिन and oxytocin is otherwise called as love hormone or cuddle hormone or bonding hormone right Gayatri Satya Ramakant Ankita Supriya ठीक अछि oxytocin and my second question is oxytocin mostly uterus रो को लेयर रे एक्ट करिवो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जहा फल कि मदर यूटेरस टा स्ट्रांगली कंट्रैक्शन हो जहा हमें कहू यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड द बेबी विल एक्सपेल्ड आउट बा रिलीज हे जिवो देन क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन विल एक्ट ऑन पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन टा मदर यूटेरस रे को वाल रे एक्ट करियो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम आंसर दैट इज मायोमेट्रियम सौदामिनी मायोमेट्रियम रे दैट इज द ऑक्सीटोसिन विल एक्ट राइट एंड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन टा मदर रो पिट्यूटरी रिलीज होबो या द फिटस रो पिट्यूटरी और द बेबी रो पिट्यूटरी दैट इज
ऑब्वियसली मार यूट्रस जदी कंट्रेक्शन हबो तो मार पिट्यूटरी ही रिलीज होतिबो ना हाइपोथैलेमस नॉट फ्रॉम द फिटस पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन विल रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ द मदर राइट मदर रो पिट्यूटरी राइट देन मोर सेकंड क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन एक्चुअली ए माने कोठी स्टोर होंते एंड सीक्रेट होंती फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ए क्वेश्चन मिसे के 500 थर हे गला पचरिया कि दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन मोस्टली कोठी स्टोर एंड रिलीज हुए प्रियंका अर्चिता सिक्की सौदामिन दैट इज फ्रॉम द मदर पिट्यूटरी राइट ठीक अछि चलो बढ़िया मदर पिट्यूटरी देन आ गोटे को which muscle present in that is scrotal sac but testis is this is the testis and this is the scrotal sac and scrotum भितरे this is the scrotal sac and scrotal sac भितरे testis तो क्वेश्चन हो एठी को मसल थाए मन रखिबो डार्टस मसल एंड क्रीमास्टर मसल ठीक अछि and this muscle is very sensitive to temperature and male can relate during the season of winter or during the cold season and the जानिचे that is the tightening of the testis बा जानिचे कि जेतबेले winter season रे हुए in case of male testis ता टिके टाइट हे जाय बा the scrotal sac ता टिके टाइट हे जाय and the during the season of summer and this season the testis बा scrotal sac ता टिके लूज हे जाय तो these muscles which is present in the scrotum dartos muscle or the cremaster muscle these are very sensitive to temperature and the second question what is the dartos and the cremaster muscle but these muscles are sensitive to temperature in case of male and during the sexual intercourse or during the sexual desire so in case of male also that is a muscle टा कोन करना testis को टिके tightening करिया रे help करे बा टाइट कर दे ठीक अछि चलो तो क्वेश्चन इज कौन ना व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बॉडी रो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हेले व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द टेस्टिस व्हाट इज द टेम्परेचर एंटी नमस्मिता ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन एंड इट इज synthesized from the hypothalamus but it is stored and secreted from the posterior pituitary you have to print it in your mind एटा पूरा मन रखो दैट इज ऑक्सीटोसिन भासोप्रेसिन किए होची ऑक्सीटोसिन भासोप्रेसिन किए देवकी एंड किए यशोदा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस एंड नाउ डेज मेल मन केस रे जो माने हेवी ड्राइवर मतलब हेवी ड्राइवर इन सेंस जो माने दैट इज 8 घंटा रु 9 घंटा पर्यंत हेवी व्हीकल ड्राइविंग करचंती इंजीनियरिंग मशीन जेमति की ड्रोजर हो क्रेन हो एंड जो गोटा हेवी व्हीकल गुड़ाक तो जो माने भासोप्रेसिन काम दैट इज भासोप्रेसिन और इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन मींस वाटर लॉस बा दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन जदी होची बा एक्सेसिव वाटर लॉस होची दैट इज इट हेल्प्स इन द प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन विल एक्ट ऑन द डीसीटी ऑफ द दैट इज किडनी तो डीसीटी रे एक्ट करिवो एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर माय द क्वेश्चन कोन ना जो माने हेवी व्हीकल ड्राइव करछन 7 घंटा रु 8 घंटा तो आमे जानि से सेमानकर टेस्टिस होची डायरेक्टली कांटेक्ट विथ द इंजन एंड इंजन रो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो टेस्टिस रो टेम्परेचर हमको बॉडी रो टेम्परेचर 3 to 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम दरकार एंड सही मानो केस रे कोन होए ना जेहेतु टेस्टिस रा डायरेक्टली कांटेक्ट होची टुवर्ड्स माने जो मशीन इंजन द्वारा तो टेस्टिस रो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाय एंड द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन द टेस्टिस इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस होबार कॉज नाउ डेज यदि जदि हेवी व्हीकल ड्राइविंग जो माने करछन से माने केसे स्पर्म प्रोडक्शन टिके लो थाय बट हम जानि छे कि वन टाइम इजैकुलेशन रे जदि गोटे 1 टेबल स्पून रो सीमेन रिलीज हुए एंड वन थिंग इट क्वेश्चन वन टाइम इजैकुलेशन रे 1 टेबल स्पून रो सीमेन रिलीज तो क्वेश्चन इज सीमेन रे 100% रु केते परसेंट होची स्पर्म एंड हम जानि सीमेन का गुने की स्पर्म एंड द फ्लूइड the sperm is 10% and the fluid is 90%. What are the glands or what are the accessory glands which is participate in the male reproductive system? कौन हो? Yes, मधुस्मिता
सुस्मिता, रमाकांत, वॉइस ऑफ कृष्णा, झरना, प्रियांशु, सौदामिन, सुप्रिया 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर राइट। तो क्वेश्चन इज जदि सीमेन देखिया तादरो 10% होची मात्र स्पर्म, sperm is not equal to semen, and if the male is ejaculating we can say that this is a semen, and semen ଭିତରେ sperm होची 10% and fluid is 90%, and se fluid ଭିତରେ seminal vesicle ର fluid and plus prostate ର fluid plus bulbo urethral ର fluid तमन को तो मेल केस रे accessory gland सब किए seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. These are the accessory glands in case of male. Then coprous gland को otherwise called as coprous gland. देखो bulbourethral gland is otherwise called as coprous gland. ठीक है जी? During the sexual intercourse, it helps in lubricate the penis. Bulbourethral gland. एंड जदि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिया सेमिनल वेसिकल होची वन पेयर बा पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड होची गोटे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड देखिया पई को टाइप रो जस्ट लाइक ए सपोज दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द पेनिस। तो प्रोस्टेट ग्लैंड टा जस्ट लाइक जो हमें जो खेलेनी जो गोल्फ बॉल जो एमरे टिक करके मारती, तो जस्ट लाइक से एंड प्रोस्टेट ग्लैंड टा ड्यूरिंग द बर्थ टू मैच्योर स्टेज को बड़ी जाए एंड 45-40 एज को स्टेबल हो जाए। बेले बेले किछि लोकों केस रे प्रोस्टेट ग्लैंड टा बहुत जोरे एनलार्जमेंट हो जाए, बहुत सारा मेल मान केस रे बहुत एब्डोमिनल पेन हो अबव द 45-50 एज, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड टा लार्ज एज एंड द लार्ज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड गोटे डिजीज इज कॉल्ड एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। बिनाइन प्रोस्टेट से केस रे प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कराबो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया एंड से केस रे दैट इज से मेल रो प्रोस्टेट ग्लैंड को कंप्लीटली रिमूव करा जिवो एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेक्टोटोमी। जेमति रिमूवल ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी एंड रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेक्टोटोमी। ताले सीमेन रे 10% स्पर्म एंड फ्लूइड इज 90% एंड फ्लूइड भितरे कार कंट्रीब्यूशन होची सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड bulbourethral फ्लूइड एंड ए फ्लूइड भीतर जो देखिया मैक्सिमम होची सेमिनल वेसिकल रो। ठीक अछि, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लूरा। अच्छा ए क्वेश्चन विषय को प्लूरा टा कार आउटर कवरिंग, प्लूरल मेम्ब्रेन। सपोज एटा हम जो पचारि जो प्लूरल मेम्ब्रेन, तुम तो आंसर जानि गलो कि यूटेरस रा आउटर लेयर पेरिमीटर। प्लूरल मेम्ब्रेन जदि हम लिखि देबे एटी ताले दिस इज द आउटर लेयर ऑफ कॉर्ड। एटा जे कहबो हम जानि पूरा ठीक सर मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास, सेति पानी गोटे करताळी दी कि क्लास को आहुरी जोरदार करा जाऊ। सुभस्मिता lungs the outer covering of the lungs is pleural membrane right, and the outer covering of the heart is called as which of the following option shows the outer covering of the heart? Pleural ना perimetrium ना pericardium ना periosteum, कौन हबो? lungs। डेली सकाळ उठी कि गोटे नाक बंद करी कि प्रश्वसनीय छाड़ लंग्स को हेल्दी रखो, कीप योर लंग्स हेल्दी। डेली सकाळ उठी कि 5 मिनिट एंती करले तुम लंग्स टा हेल्दी रहबो एंड भलो। एंड अवॉइड द सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंज्यूमिंग। pericardium is the outer layer of the heart and pleural membrane is the outer covering of the lungs and perimetrium is the outer wall of the uterus and periosteum is the most of the bone ro outer covering right। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वरु जेमति कि तुम माने जानि छ OUT ऑनलाइन ऑफलाइन बैच रे हमर प्रोवाइड करा छी कोर्स एंड जो माने एठी देखु छथि YouTube रो लाइव रे कोन से हमर ऑनलाइन बैच रो स्टूडेंट नोती किबा ऑफलाइन बैच रो स्टूडेंट नोती, तो से माने जदी इंटरेस्टेड जॉइन करे पई ए तळ नंबर रे कॉल करी कांटेक्ट करी पारी बो। नेक्स्ट क्वेश्चन थिक मस्कुलर लेयर ऑफ डैश मसल कॉन्स्टिट्यूट मिडिल लेयर ऑफ यूटरस, कोन हबो? अमेजिंग कृष्ण, अंकिता, सव्यसाची, तृप्ति, सुकन्या, दीप्तिमयी, झरना, अभिप्सा, वॉइस ऑफ कृष्णा, तृप्ति, सार्थक, अर्चिता, अनन्या। ए स्मूथ मसल राइट, परफेक्ट स्मूथ मसल राइट, स्मूथ मसल। तापर मते एइ गोटे को
structural and functional unit of lungs. Structural and functional unit of lungs. Lungs रो structural and functional unit कौन? What is the structural and functional unit of lungs? पटापट को पूरा धड़ा धड़ सर वीडियो ठीक से सुबुनी बोले तमर बोधे टिके ये जो फोन रे प्रॉब्लम बोधे टिके कोन थिबो alveoli right. Structural and functional unit of lungs होची alveoli. Structural functional unit of liver. Structural functional unit of यदि liver देखिए ताले कौन हबो? It is hepatic lobule. Hepatic lobule. Structural functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney is nephron. Same thing structural and the functional unit of testis seminiferous tubule. Strictly मन रखो. The structural and the functional unit of testis is seminiferous tubule. Seminiferous tubule is called as the structural and the functional unit of testis. चलो next question. The Graafian follicles release. The Graafian follicles release what? Secondary oocyte, primary oocyte, ovum. Seminiferous tubule सूरज, प्रीति ज्योत्सना, तृप्ति, चित्रसेन, पायल, अनन्या, हुतेशना, alveoli. Sir D. Both A and B. The Graafian follicle कौन release करे? This is the ovary and this is the fimbriae, fallopian tube, and this is the vagina. Let it. So this is the uterus, and हम जानी छे that is primary oocyte चारिपटे follicle develop primary follicle, then secondary follicles, then tertiary follicles, then tertiary follicle भितर primary oocyte टा meiosis 1 complete करिवो, then produce करिवो, that is secondary oocyte. तो secondary oocyte चारिपटे Graafian follicle. तो Graafian follicle release करिवो secondary oocyte. ठीक अछि? Graafian follicles will release the secondary oocyte. Graafian follicle release karibo secondary oocyte. Then secondary oocytes will go to the ampulla isthmus junction. Suppose this is the secondary oocyte and sperm will come. Then sperm will kiss the secondary oocyte, and due to the kissing of sperm to the secondary oocyte will complete the meiosis 2. Right? Secondary oocyte will complete the meiosis 2 and produce the ovum. Right? The secondary oocyte Graafian follicle rupture ले secondary oocyte produce करिवो, and secondary oocyte आजी सर आजी ड्राइंग कंपटीशन अरे बुझिया पई टिके जो जनरली खाली जस्ट बुझिया पई एंड तमे रिलेट करिया दरकार खाली आ थोड़ी एंती पूरा स्ट्रक्चर करा जो छोटो पिला भले दिस इज द vagina, this is the cervical canal, this is the uterus, and these are the layers of or walls of the uterus. This is the finger like projection of the fallopian tube called as fimbriae. This is the infundibulum, and this is the ampulla, this is the isthmus. ठीक है? तो secondary oocyte, and secondary oocyte will complete the meiosis 2 when the sperm will kiss the secondary oocyte. चलो next question. The release of ovum from the ovary is known as release of ovum from the ovary. Release of ovum from the ovary is called as कौन होबो? Release of ovum from the ovary. कौन होबो आंसर? Release of ovum from the ovary. Ovulation, right? Ovulation. What is gametogenesis? Answer to ovulation. कितने हार्ड क्वेश्चन है इटा? Ovulation. Then what is gametogenesis? Gametogenesis केते वाला हो? At the age of 14 years. ना both male and female कथा कहूची. 14 years या 25 years या 40 years. What is the appropriate or the what is the age for the gametogenesis, formation of gamete? And the male gamete is sperm and the female gamete is ovum, right? And gametogenesis the age 14 approximately हमें जाने चाहिए maturity पड़े ऐसे at the age of 14 बा जोटा को हमें normally करूचे. Then what is parturition?
What is parturition? What is the term relate to parturition? Parturition 14 years. Prajakta 14 years. Parturition पर second question तुम पई gonadotropin releasing hormone किए only FSH, only LH ना both LH and FSH? पूरा ये चैप्टर न देखो बायोलॉजी इज वेरी वास्ट माने तमे जदि रिलेट करिवो माने एते डीपली जाइकिर पढिबो एंड इट इज टू मच इंटरेस्टिंग आल्सो बाकी जेहेतु आम एमसीक्यू डिस्कशन करते तो सब जिन डिटेल्स कहया पॉसिबल होनी फिर भी जदि इफ एनीवन इंटरेस्ट देन कमेंट करिवो देन ए चैप्टर को हमें पूरा कंप्लीटली गोटे वन शॉट टाइप रो भी आनी पारिया ठीक अछि बोथ एलएच एंड एफएसएस LH and FSH is called as the gonadotropin releasing hormone, right? Because both LH and FSH act on the gonad. So, chalo next question. Total number of polar body formed in oogenesis. Oogenesis or total number of polar body formed in oogenesis. Total number of polar body formed in oogenesis. Oogenesis. कौन अब आंसर कौन अब टोटल नंबर ऑफ विनय केतरा ओ पोलर बॉडी 1 2 3 5टा पोलर बॉडी आउ जनकर 3 3 3 3 तेते केते एतरा 3 पोलर बॉडी फॉर्मेशन हे जाउची यस सर वन शॉट आंसर ठीक है जानिया सत्य खबर सॉरी सत्य खबर सर आज हैंडसम देखा हो थैंक यू भूमिका 3 दैट इज 2 पोलर बॉडी सी केम देला दैट इज 2 पोलर बॉडी चलो नेक्स्ट द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन व्हिच बिगिंस एट द puberty is called as menstrual cycle oogenesis or oogenesis menarche and ovulation the first menstruation which begins at the puberty is called as one shot sir ठीक श्योर सब्यसाची दीपांजलि सार्थक लिपिका स्वयं अंकिता ओम स्टडीज ब्लॉग्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी वन शॉट ठीक अछि रेडी आनिया द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन व्हिच बिगिंस एट puberty is called as and the most sweet and the cute answer is menarche right तापर मते को फॉर एग्जांपल a female is having the cycle of suppose a female is having the cycle of 28 days ठीक अछि on which date केते डेट रु केते डेट भितरे she has to prevent sexual intercourse to को डेट रो को डेट भितरे सी हैज टू प्रिवेंट द सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज कि सी जेमति कि प्रेग्नेंट होबार निज को प्रिवेंट करि परिबो एंड सपोज फर्स्ट मते को 28 दिन रो साइकिल भितरे केते दिन रो ओव्युलेशन होतिबो दैट इज हमें जानि छे ओव्युलेशन रो फेज जानिया पई जेतिक दिन रो साइकिल -14 डेज एंड नॉर्मल गोटे फीमेल रो द नॉर्मल साइकिल इज 21 to 35 days दिस इज द नॉर्मल रेंज एंड इफ द साइकिल इज बिलो 21 days it is abnormal and if the cycle is 30 above the 35 days it is also abnormal तो हम जानि छे जदी 28 days रो साइकिल ताले -14 कर दवा द 14th रे ओव्युलेशन जदी 30 डे रो साइकिल -14 जदी 35 डे -14 तार -14 ले 14th रे ओव्युलेशन होतो एंड हम जानि छे दैट इज द viability of sperm is that is what is the viability of sperm and what is the viability of secondary oocyte एटा तो क्वेश्चन what is the viability of sperm बा फीमेल रो फालोपियन ट्यूब भितरे स्पर्म टा केते दिन निजुकु बंचै के रखि परिबो जिम सर बिरियानी सर आवर राजा सर जय कृष्ण कौन आंसर 2 to 3 days 72 hours or 3 days right तो 3 days तो हमकु मोस्टली प्रिवेंट करे रछि 10 रु 17 दिन बा जेतिक दिन साइकिल तारु 14 डेज हमको माइनस करिया अछि
देन प्लस माइनस 4 डेज जदि 30 डे रो साइकिल ताले माइनस 14 कले केते हबो 6 एंड 16 तो दैट इज 16 डे रे हमकु 16 प्लस माइनस 4 तो एतिकी दे रे प्रिवेंट करे अछि चलो then which hormone sorts the ovulation which hormone sorts the ovulation which hormone sorts the ovulation answer option LH FSH and growth hormone and prolactin hormone which hormone sorts the ovulation dipti LH सौदामिनी LH लक्ष्मी श्रद्धा किट्टू चंदन LH सॉर्ट द ओव्यूलेशन एंड बढ़िया क्वेश्चन जदि पचारे जीवो LH टा मेल केस रे कोठे एक्ट करिवो सपोज दिस इज द LH एंड हम LH राखी कर दबा LH इज अ हार्मोन व्हिच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी तो सपोज दिस इज द LH एंड LH इज going to act on the testis LH कोठी गला एंड टेस्टिस रे एक्ट करिया पे ताहले से कोठी एक्ट करिवो एंड ऑप्शन इज ता पाखरे अछि मेल जर्म सेल अछि ता पाखरे अछि सर्टोली सेल देखिला कि मेल जर्म सेल सोइची सर्टोली सेल सोइची एंड लेडिक सेल भी सोइची तो से जाय कि कहा ऊपर एक्ट करिवो LH it will act on the ledic cell right then if FSH is going to the testis then से जाई कोठे ऐड करियो मेल जर्म सेल सर्टोली सेल लेडिक सेल कोठे ऐड करियो FSH इन केस ऑफ टेस्टिस सर नीट रो क्रैश कोर्स आडतु नीट रो क्रैश कोर्स तमरो आसी जीवो हला नीट पई गोटे स्पेशली भी हमर चालिबो गोटे वीडियो एक्सक्लूसिवली नीट एंड देखो डोंट वरी ए जो क्वेश्चन कराउ छी 100% तमरो देखो कांसेप्ट पूरा सिमिलर and a concept को सर्टोली सेल नॉट सेल सोमापिका सर्टोली सेल and it will act on the सर्टोली सेल for the spermiogenesis it would question spermatid to spermatozoa spermatid suppose this is the spermatid and spermatid to spermatozoa this is the sperm and here is the tail of the sperm the sperm ta jeta tail lagi gala and now the sperm is happy because the sperm is having the tail this is called as a mature sperm or spermatozoa what is the procedure name or what is the process name spermatid ru spermatozoa amazing कृष्ण बिरयानी सर जिम सर प्रभु रक्षा करो Spermiogenesis, right? Spermiogenesis. That is spermatid to spermatozoa. The process is called as spermiogenesis. Then next question. On average interval of the menstrual cycle in females is about dash days. What is spermiogenesis? चलो ये क्वेश्चन कौन होगा? An average interval of the menstrual cycle in female is about average 28 to 29 तो चलो then next question तम पाई रहिबो next question bacteria vaginalis चलो An ovum is released during the dash of each menstrual cycle. Ovum is released during the dash of each menstrual cycle. Each menstrual cycle रे केतेबेले that is the ovum is released. कौन answer? What is the answer? Initial, terminal, middle. कौन होबो? Right, middle. Then come to the question.
each testis has how many testicular lobule? गोटे testis रे केते testicular lobule? How many testicular lobule in each testis? कौन आंसर? What is the answer? Each testis has, देखो आमे जदि नॉर्मल देखिया छुआ को क्वेश्चन तुम मन आस्तिबो दैट इज हमें देखिया जदि टेस्टिस भितरे देयर इज अ ईच टेस्टिस हैज 200 टू आंसर कोन 250 ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स एबडा तुम कंपार्टमेंट्स पाइबो घर पाइबो एंड द कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड इफ यू जूम one testicular lobule or one compartment then you can find टेस्टिस भितर सब घर गुडा कह जाए कंपार्टमेंट गोटे टेस्टिस भितर 250 टा घर 250 कंपार्टमेंट एंड 250 कंपार्टमेंट को हम कहते टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड जदि गोटे घर बा गोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल को जूम करिवो ता भितर तुम पाइबो कोन ना ता भितर पाइबो माछो बिरयानी चिकन नाही द टेस्टिकुलर लोब्यूल भितर पाइबो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल को जदि जूम करिवो ता भितर पाइबो ट्रायंगल एंड सर्कल. Sorry, this one is the male germ cell and you can find Sertoli cell. ठीक अछि 1 to 3 seminiferous tubule. 12 number कौन 1 ovum is released during the each menstrual cycle and menstrual cycle 28 cycle रे obviously middle day रे ovulation हुए that is from the Graafian follicle the secondary oocyte will release. Then male sex accessory ducts rete testis एपिडिडाइमिक्स भास्ट डिफरेंस आ भितरु कोटा होची मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस एपिडिडाइमिक्स भास्ट डिफरेंस सर हेयर कोट करले हेयर कोट निजे घरे 1999 मसीह दर्पण देखिकी दर्पण आ कइची ओम स्टडी ब्लॉक्स कौन आंसर बी आई ट्रिपल आई डी 1 डबल आई ट्रिपल आई ऑब्वियसली रेटेटेस्टिस एपिडिडाइमिक्स भास्ट डिफरेंस तो ऑल ऑफ दिस वॉइस ऑफ कृष्णा राइट लक्ष्मी डी ठीक अछि एंड आ भितर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज छाड़ो कोठी आ भितर को ऑप्शन रे दैट इज स्पर्म टा स्टोर हुए एंड कंसंट्रेट हुए स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म हम भी कहि परिया स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म बा स्पर्म टा कोड स्टोर हुए एंड कंसंट्रेट हुए एंड मन रखो स्पर्मेटोजेनेसिस टा गोटे सेकंड रे ही जाइनी कि तुम भाबिबो कि हम जो कहले 14 ग्राम टेस्टिस रो वेट हेले एंड गोटे ग्राम रो गोटे सेकंड लाइन था गोटे सेकंड एंड गोटे ग्राम टिश्यू रु तुम बाहर भाबी दो कि दैट इज हमरो रिलीज होची गोटे सेकंड रे 1000 स्पर्म माने गोटे सेकंड रे स्पर्मेटोजेनेसिस हे जाउची स्पर्मेटोजेनेसिस होवा पई कंप्लीटली प्रोसीजर को लागि जाय 65 to 70 डेज स्पर्मेटोजेनेसिस रो प्रोसीजर बा दैट इज स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्म ये प्रोसीजर 65 to 70 डेज रो प्रोसीजर एंड ए तमरो 1 सेकंड रे जो स्पर्म ता रेडी होची ता 65 डेज रो से प्रोसीजर स्टार्ट कर दीची राइट तो आंसर कोन हो दिस इज द एपिडिडाइमिक्स हम कहि पर स्पर्म रो स्टोर हाउस बा स्पर्म विल स्टोर एंड कंसंट्रेट इन द एपिडिडाइमिक्स एंड एपिडिडाइमिक्स रो तीनटा पार्ट जदी जस्ट गोटे रफ डायग्राम करिया टेस्टिस रो suppose this is the testis and this is the testicular lobule and seminiferous tubule बर्तमान पे sperm टा इटी ठीक अछि suppose this is the sperm and this is the rete testis artia this is vas efferentia and this is the epididymics डायग्राम गिरे मुंडो खराब डायग्राम दिस इज द एपिडिडमिक्स एंड एपिडिडमिक्स रो तीनटा पार्ट कापट कॉर्पस एंड कौडा तो एपिडिडमिक्स रे नॉर्मली जनरली स्पर्म टा स्टोर हुए एंड कंसंट्रेट हुए चलो तो पाथवेटा कोन मन रखिबो कंप्लीटली स्पर्म टा पूरा जीवा पर्यंत बा हां आ गोटे कथा पाथवेटा मन रखिबो रेटेटेस्टिस देन होची कोन ना दिस इज द भास इफरेंशिया
This is the epididymis. Then this is the vas differentia. ठीक अछि vas differentia spermatic cord देगिरी then चलला ग्लैंड को सब पूरा क्रॉस करके आसी जो एट इज पेनिस पाखरे पहुंची जो देयर इज ग्लैंड्स कोन सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड सब ग्लैंड रो मिसी की देन इजैकुलेट हबो एंड द मेल यूरेथ्रा is otherwise called as urogenital tract. Why the male urethra गोलमाल है यूज ड्राइंग देखो जस्ट खाली मन रखो दिस इज द स्पर्म टाइटल इजैकुलेट हला फर्स्ट रेटे टेस्टिस देन दिस इज द vas efferentia देन epididymis देन vas differens तो ऑर्डर टा मन रखियो रेटे टेस्टिस देन vas efferentia देन epididymis देन vas differens ठीक अछि देन सब ग्लैंड्स गुडा को मीट करिवो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट बल्बोइरेथ्रा मिसिबो ठीक अछि तो वर्तमान मतो क्वेश्चन होची व्हाई द मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मेल यूरेथ्रा इज अदरवाइज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट the sahu mohesh the epidermis is a dog-like organ that connects the testes to vas differens perfect is comprised of four anatomical the initial segment corpus corpus and coda right mohesh male urethra is otherwise called as urogenital tract because in case of male that is both urine and sperm male मानो केस रे urine pass and sperm pass गोटिए पाथ देक हुए and this path is called as the urethra बा जहा को हमें कहउछे in case of male urethra is otherwise called as urogenital tract because both urine and sperm pass but in case of female that is both the vaginal fluid and the urethra dita कर अलगा path but in case of male it is otherwise called as urogenital tract because both urine and sperm and you have to remember in your mind that is both sperm and urine cannot pass at the same time रे sperm and urine pass कर परिवेनी that is sperm and urine गोटे पाथ देख जाई परिबे दीटा को गाड़ी गोटे रास्ता रे जीवो किंतु दीटा गाड़ी एका टाइम रे जाई परिबे चलो urogenital tract and the what is the three layer of tissue which help in for the erection of the penis the three layer of tissue कौन कौन जोटा होची that is penis को erection रे help करे two layer of ये गोटे layer tissue ये होची गोटे layer 1 ये होची लेयर 2 एंड दिस इज आउटर लेयर तो टोटल तीनटा लेयर टिश्यू कौन राइट सीमेन और यूरिन इजेक्ट थ्रू द वन पैसेज गोटे पैसेज देखि सीमेन एंड यूरिन रो रिलीज हुए तो कौन हबो थ्री लेयर होची टू लेयर ऑफ ए जो टिश्यूटा कॉर्पोरा कावर्नोसा एंड दिस इज कॉर्पोरा स्पोंजिसम ठीक अछि दीटा लेयर ऑफ कॉर्पोरा कार्बोनोसा ये दीटा लेयर अछि कॉर्पोरा कार्बोनोसा एंड दिस इज द कॉर्पोरा स्पोंजिसम एंड दिस इज फॉर द इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पोरा कार्बोनोसा एंड कॉर्पोरा स्पोंजिसम दीटा साइड रहछि कॉर्पोरा कार्बोनोसा एंड कॉर्पोरा स्पोंजिसम चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट स्टोर स्पर्म इजी क्वेश्चन which of the following is help in store the sperm mohes corpora cavernosa की होची sperm को स्टोर करे एटा जे न कहबो सीरियसली पूरा माडो माने 100 रे माडो epididymis राइट स्वयं सुमन बढ़िया which of the following dot store the sperm that is epididymis ready caput corpus coda चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with a pair of mammary gland is integrated structure and functional to support the process of कौन अब आंसर what is the answer here the female reproductive system along with a pair of mammary glands is integrated structure functionally all of the above right
that is ovulation रे and fertilization रे, child care रे, pregnancy रे and all of the above रे. ठीक अछि. एंड बेले बेले केस रे कोन हुए ना जनरली हमें देखे कि जेतोले यदि लेबर पेन बोली जोटा हमें कहूचे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन बा जेतोले सिवियरली पेन जोन गोटे फीमेल को फेस हुए तो से टाइम रे दैट इज कोन कि हमको इमीडिएटली किछि इंजेक्शन विजेक्शन दे दियो जेंति पेन किलर. सो हियर आई वुड लाइक टू से you have to prevent the patient from the injection because at the time of parturition जेतोले सिवियर पेन हुए केबे भी इंजेक्शन जदि नबा एंड इन केस जदि से इंजेक्शन टा मदर को सपोज कोन ना अधिक निद करै देला और दैट इज मदर को बेहोश करै देला एंड से टाइम रे हाइपोथैलेमस रो जो ऑक्सीटोसिन टा रिलीज होवा कथा नेचुरल ऑक्सीटोसिन टा जोटा रिलीज हेकरी दैट इज द स्ट्रांग यूटेराइन कंट्रैक्शन करे दरकार बिकॉज़ स्ट्रांग यूटेराइन कंट्रैक्शन हेले दैट इज एक्सपेल हे जीवो बा बेबी टा बाहर जीवो तो सेटा मे भी न होई पारे एंड इट मे भी अधिक कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करि पारे. तो क्वेश्चन नंबर 17 टा रहइबो तम पई होमवर्क रहइबो देन एक 17 क्वेश्चन टा तमे कमेंट रे जणेबो देन या बाहर को मु तम किछरा क्वेश्चन आउ किछरा क्वेश्चन पचारछि. तो 1 सेकंड से क्वेश्चन तम पई रहइबो होमवर्क क्वेश्चन रहइबो देन गोटे बेबी टा जेतले डेवलपमेंट हुए इन द यूटेरस ऑफ द मदर केतेटा ट्राइमेस्टर दे की फेस करे बा केते मास टोटली परे हम जानि छै 9 मंथ एंड 9 मंथ भितरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड मेल टेस्टोस्टेरोन दैट इज हमर मेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करे लिबिडो. तो first trimester, second trimester, third trimester, and one more information here that is during the first trimester बा प्रथम मास second month and third month first month second month third month the pregnancy टा एई टाइम रे that is जदी कोनसी फीमेल सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूमिंग या एनी टाइप रो ड्रग्स बॉडी को जाउची थ्रू द वाजाइना और थ्रू द माउथ हो बिकॉज़ that is माउथ वाजाइना देगिरी भी मे भी किछि बैक्टीरिया में भी जाई परंती. So during this time the female को most of the time रे prevent करियर अछि alcohol रू and also drugs रू and also any type of foreign antigen रू because एई टाइम रे जेहेतु maximum organ formation हेइतै and that is rapid cell division हेइतै एई टाइम रे that is baby case रे condition करि पारे फोकोमिलिया कोन ना डिफॉर्म्ड बेबी फॉर्मेशन हेइ पारे that is गोटे बेबी रो abnormality देखाइ पारे बेबी भल से थिवो तार गोड़ नथिवो तो एई भला सिचुएशन क्रिएट करि पारे. मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे दैट इज मदर को प्रिवेंट करे रछि दिस टाइप ऑफ थिंग्स रू निज को दूरे रखिया पाए. तो चलो ये रहला तमरो. तो नेक्स्ट क्लास रे देखो केबे भी फील करनी देखो ब्रीदिंग रा में ऑलरेडी मु जो क्वेश्चन आनी के आस्थिली तार रैपिड फेरे से क्वेश्चन को छाडी के हमें ताटो टॉप क्वेश्चन करथले देन ए चैप्टर रे जेमति के आउ किछि वेराइटी रो क्वेश्चन बाकी रहला जेमति कि तमरो टोटली ऊपर प्रेगनेंसी टाइम रे को ऑर्गन फॉर्मेशन हुए फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर एंड आल्सो ड्यूरिंग द ट्राइमेस्टर बा ए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर दैट इज मदर रो बॉडी रे कोन कोन चेंजेस आसे देन आल्सो कोन कोन हार्मोनल चेंजेस आसे देन से टाइम रे गैस्ट्रुलेशन कोन मोरुला कोन ब्लास्टुलेशन कोन ये सब सिचुएशन. तो नेक्स्ट जेतोला रैपिड फायर रिवीजन करिया तो सेथिरे आउ जेति क्वेश्चन ओडा रहिला ओयूटी एग्जाम नंबर 4 एंड 6 तो तार क्वेश्चन ओडा को हमें कवर अप करिया. तो डोंट वरी को चैप्टर को भी क्वेश्चन मिस करिया ने हमें 100% चैप्टर ए टू एंड जेड पर्यंत से टॉपिक भीतर जहा जहा तमरो सब टॉपिक अछि बा जहा जहा इंपोर्टेंस अछि सब को कवर करिया. देन यार अपन अगेन रैपिड फायर आनिया जेति जेति हमें सिलेबस सारी सारी जिया तो से अगेन तार रैपिड फायर आनिया रैपिड फायर रे यार 10-15 टा क्वेश्चन पकेया जेमति कि होल ओवर द चैप्टर कंप्लीट हेई परतो. ठीक अछि. तो चलो देन तम पई रहिला क्वेश्चन सर ओयूटी एग्जाम 4 to 6 एंड ऑलरेडी हम चैनल भी अपलोड हेछि तुम देखि परिबो कंप्लीटली तमरो ओयूटी फॉर्म बी केमिति फिल अप करबो कोन प्रोसीजर रे फिल अप करबो एंड तारे डेट कोन एंड तुमको फॉर्म भी फिल अप करा बेले कोन सावधानता मेंटेन करिया पड़िबो सब जिंसर वीडियो आसी जिवो ए चैनल रे डोंट वरी बस तमे फोकस करो. आ बाकी रहिला नेक्स्ट क्लास रे हमरे नेक्स्ट गोटे टॉपिक आनी आसिया
तो एई चैप्टर रे कार जदी किसी डाउट थिवो देन तमे कमेंट रे जणेबो नेक्स्ट क्लास बेलकु तार डाउट क्लियर करिया एंड हैव ए गुड नाइट नंबर क्वेश्चन ठीक अछि चलो सर एडवांस श्री राम नवमी थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सुस्मिता पायल चंदन where do you find meiosis in female reproductive system meiosis female reproductive system रे देखो oogonia रो that is primary oocyte secondary oocyte obviously ए सब तमे हम ओवरी भीतर पाया ठीक अछि थोड़ी that is oogenesis हमें पाया यूट्रस भीतर it is completely procedure हबो and secondary oocyte जीवो towards the fallopian tube चलो जय श्री राम कृष्ण जय श्री राम चलो